Hello students, myself Mrs. Garima Sharma, lecturer physics, Government Girls Senior Secondary Smart School, Nehru Garden, Jalandhar. Today we are going to discuss a very important topic of geometric optics, that is mirror formula and linear magnification. Mirror formula basically deals with the spherical mirrors. As all of you know that there are two types of spherical mirrors, that is concave mirror and convex mirror. So mirror formula basically deals with the relation of the focal length of a spherical mirror and the distances of the object and the image from the spherical mirror. This is a very important formula, as by using this formula various type of spherical mirrors with different dimensions are designed. And moreover, we will also discuss about the linear magnification. So first of all, mirror formula. Mirror formula is a relation between the focal length of a spherical mirror and the distances of the object and image from the spherical mirror. आपके पास जब आपने spherical mirrors स्टडी किए तो उसमें आपने ये स्टडी किया कि focal length is the distance between the pole and the focus of a spherical mirror. इसी तरीके से जिस पॉइंट पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं उस पॉइंट से पोल का डिस्टेंस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड सिमिलरली जिस पॉइंट पे हम इमेज को रखते हैं उस पॉइंट से लेके पोल तक का डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस होता है. नॉर्मली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को हम स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं और फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं. सो इन सारे पैरामीटर्स का जो एक रिलेशन हमने स्टडी करना है दैट इज नोन एज मिरर फॉर्मूला. मिरर फॉर्मूलाज को डिराइव करने से पहले बेटा हमें उसके रिगार्डिंग कुछ साइन कन्वेंशंस क्लियर होनी चाहिए. साइन कन्वेंशंस क्या होती हैं? साइन कन्वेंशंस आर बेसिकली ए सेट ऑफ रूल्स which is to be followed before doing any article or before deriving any equation. So साइन कन्वेंशंस को हम अब स्टडी करेंगे. साइन कन्वेंशंस में सबसे पहली साइन कन्वेंशन है कि all the distances are measured from the pole of the spherical mirror. आप जौन सा भी spherical mirror ले रहे हो, चाहे वो concave mirror है, चाहे वो convex mirror है, जितने भी हमने डिस्टेंसेस मेजर करने हैं वो सारे के सारे डिस्टेंसेस हम कहां से लेंगे? पोल से. सेकेंड पॉइंट, द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव एंड द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज नेगेटिव. इट मीन्स दैट कि जब भी हम कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, मान लो हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं या हम इमेज का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं या हम फोकस का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो ये सारे डिस्टेंसेस जो हमने मेजर करने हैं अगर तो उसकी डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट सेम है बेटा तो हम इन डायरेक्शन इस डिस्टेंसेस को पॉजिटिव लेंगे, और अगर इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन और डिस्टेंस की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो हम इस डिस्टेंस को नेगेटिव लेंगे. Right? Third rule is the heights measured upwards and perpendicular to the principal axis of the mirror, they are taken as positive. कि जितनी भी जो heights हैं जो upward direction में हैं they are all positive, और जो heights downward होती हैं and they are again perpendicular to the principal axis of the mirror they are taken as negative. So जब भी हमने कोई mirror formula डिराइव करना है तो उससे पहले हमें ये सारी साइन कन्वेंशंस अच्छी तरह क्लियर होनी चाहिए. Then the derivation becomes very easy. So let us start with the first mirror formula for a concave mirror. आपके सामने डायग्राम में concave mirror का इमेज फॉर्मेशन क्लियर नजर आ रहा है, जिसमें हमारे पास AB एक ऑब्जेक्ट है. AB में से बेटा एक रे ऑफ लाइट जो है वो फॉल कर रही है spherical mirror के ऊपर और वो फॉलो कर रही है पाथ D टुवर्ड्स प्रोड्यूस दैट थिंग.
दूसरी जो रे है वो P पॉइंट पे फॉल कर रही है और P पॉइंट से वो रिफ्लेक्ट हो रही है। थर्ड रे जो है वो आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास कर रही है। जहां ये तीनों रेज मीट करती हैं जाके आफ्टर रिफ्लेक्शन, जहां ये तीनों मिल रही हैं वहां पे फाइनल इमेज फॉर्म्ड हो रही है, जो कि हमने रिप्रेजेंट की है A डैश B डैश से। AB is the object and A dash B dash is the image, right? F is the focal length. So if the object distance, that is BP, is represented by small u, the image distance, that is B dash P, is represented by small v, and the focal length is represented by F. So in this case, according to the position of the object, two cases arise. अगर तो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में है तो वर्चुअल इमेज बनेगी, और अगर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल फोकस के बियॉन्ड है तो रियल इमेज बनेगी। जैसे कि इस टाइम जो केस आपको विजिबल है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल फोकस के पीछे है, तो जो आपकी इमेज बन रही है बेटा वो रियल बन रही है A डैश B डैश। द इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। हम आज दोनों केस डिस्कस करेंगे। जब रियल इमेज बनी है तो मिरर फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा, और जब आपकी वर्चुअल इमेज बनी है तो मिरर फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा। सो लेट अस डिस्कस द केस 1, रियल इमेज। When the object is held in front of the concave mirror beyond the principal focus, the real image is formed. Right? As it is clear in the diagram, the object is AB and the image is A dash B dash. Now, to derive the mirror formula, let us consider two triangles, triangle ABC and triangle A dash B dash C. As angle ABC is equal to angle AB dash C, both are perpendicular angles 90 degree. I repeat, angle ABC is equal to angle A dash B dash C, that is 90 degree. Moreover, angle ACB and angle B dash CA dash are vertically opposite angles. So these two triangles satisfy the property for two triangles to be similar. So these triangles are similar. As triangle ABC is similar to triangle A dash B dash C, so we can take the ratio of the sides, that is AB over A dash B dash is equal to CB over CB dash. Again, as triangle ABP and triangle A dash B dash P are similar, so again I will take the ratio AB over AB dash, BP over BP dash. So in this way, if we compare these two equations, first equation is AB over AB dash is equal to CB over CB dash, and second equation is AB over A dash B is equal to PB over P dash PB dash. When I compare these two equations, what happens? It comes out to be CB over CB dash is equal to PB over PB dash. Now, as in the sign conventions, we have studied that all the distances are to be measured from the pole. Remember? So, when we will apply these sign conventions, first thing, CB, in equation number 3, we have 4 parameters. One is CB, other is CB dash, other is PB, other is PB dash. So we have to convert CB and CB dash in the terms of pole, क्योंकि हमने पहले ये कहा है कि हमें सारे डिस्टेंसेस पोल से लेने हैं. So
as from the diagram it is clear that CB can be represented by PB minus PC and CB dash can be represented by PC minus PB dash. So putting this value of CB and CB dash in equation number 3, we get PB minus PC over PC minus PB dash is equal to PB over PB dash. Now, according to the sign conventions, as you can clearly see in the diagram, कि जो हमारी direction of the incident light है, वो है from A towards the spherical mirror, right? जैसे कि आप clearly diagram में देख रहे हो कि वो D point पे touch कर रही है. So जो distances बेटा हमने लेने हैं, हमने ये कहा था the distances which are in the direction of the incident light, they are taken as positive. अब हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और हमारा इमेज का डिस्टेंस जो ये दोनों है ना, दे आर ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट. सो वो आ गया हमारे पास, हमने पी बी को ले लिया माइनस यू और पी बी डैश को ले लिया माइनस बी. क्यों माइनस में लिया? क्योंकि ये दोनों जो हैं ऑब्जेक्ट भी और इमेज भी, इनका जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं इट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट. ठीक है, इसी तरीके से आपका जो पी सी है वो भी क्या है? आर. सी इज द सेंटर ऑफ द कर्वेचर. अब बेटा जब आप ये सारी वैल्यूज पुट करोगे इक्वेशन नंबर 4 में तो आपके पास आ जाएगा u प्लस आर ओवर आर प्लस वी इज इक्वल टू माइनस यू ओवर माइनस वी. सारी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आपके पास एंड में आ गया यू आर प्लस वी आर इज इक्वल टू 2uv. Now dividing both sides by UVR, we get 1 by V plus 1 by U is equal to 2 by R. Now 2 by R is what? It is the focal length. R is equal to 2F. So putting this value, we get 1 by V plus 1 by U is equal to 2 over R. That is 2 over 2F, that is 1 by F. So this is the derivation of the mirror formula for a concave mirror in the case of real image, that is 1 by V plus 1 by U is equal to 1 over F. On the same note, we can derive this formula for the virtual image. As in this case, you can clearly see कि हमारे पास जो इमेज है, ऑब्जेक्ट हमारा ए बी है, ए बी में से रेज निकल रही हैं, द रेज ऑफ लाइट आर फॉलिंग ऑन द स्फेरिकल मिरर, दे आर गेटिंग रिफ्लेक्टेड बैक, और जो रेज रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं जब हम उनको प्रोड्यूस करते हैं then they appear to meet at point A dash. So the final image, which is virtual in nature, is being formed at point A dash B dash. Hence, corresponding to object AB, and virtual, erect and magnified image is being formed at point A dash B dash. Now in this case, the focal length is given by F, the object distance is given by U, and the image distance is given by V. As already we have done the same steps in the last article, again following the same steps, first of all, we will use the concept of the similar triangles, right? Triangle ABC and triangle A dash B dash C are similar. So taking the ratio AB over A dash B dash is equal to CB over CB dash. Similarly, again AB over A dash B dash is equal to PB over PB dash. Putting the values, everything we get again, doing all the mathematical steps. The big change is at the point, the जो हम बेटा image का distance ले रहे हैं, that will be positive. क्यों? क्योंकि अब हमारी जो image बन रही है वो बन रही है right hand side, which is in the direction of the incident light. So object का distance negative है, image का distance positive है, और center of curvature से pole का distance r वो again negative. Putting all these values, we get ur minus uv is equal to minus vr plus uv. So doing all the calculations, we get 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f.
So in this way it is clear that कि चाहे हमारे पास बेटा concave mirror हो, चाहे हमारे पास concave mirror की real image हो, चाहे यहाँ हमारे पास concave mirror की virtual image हो, दोनों cases में हमने mirror formula क्या derive किया, 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f by following the proper sign conventions. Similarly, in the case of a convex mirror, Similarly, in the case of a convex mirror, again, let us consider the same parameters. पोल क्या है, फोकस क्या है, आपको ये सारी चीजें क्लियर है ना, ठीक है। उसी तरीके से जब हम कन्वेक्स मिरर के लिए डेरिवेशन करेंगे तो हमारे पास कन्वेक्स मिरर के केस में अगर ए बी ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो इमेज है वो कैसी बनती है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ये सारी चीजें आप ऑलरेडी स्फेरिकल मिरर्स के केस में स्टडी कर चुके हो, ठीक है। ये इमेज बन रही है। अगेन we will take the two similar triangles ABC, A dash B dash C. We will use the concept of similar triangles. We will compare the proportions. So again coming to the equation number in this case 8. CB over CB dash is equal to PB over PB dash. Measuring the same distances. अब इस केस में जो दो चीजें नोट करने वाली हैं, that is first thing, the object distance is negative, the image distance is positive because image is on the right hand side, it is on in the direction of the incident light, and again the radius is also positive. So putting all the values and again doing the calculations in the same way, we get the mirror formula 1 by u plus 1 by v is equal to 2 by r, that is 1 by u plus 1 by v is equal to 1 by f. So this is all about the mirror formula. That is, in this we have proved that 1 by v is equal to 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. Now coming to the linear magnification of a spherical mirror. The linear magnification of a spherical mirror is actually the ratio of the size of the image to the size of the object. It is given by h2 over h1 or it is given by minus v over u. Now when m is greater than 1, then the image is enlarged. When m is less than 1, then the image is diminished. And when m is positive, then the image is erect. When m is negative, then the image is inverted. So we have to keep all these points in mind when we have to discuss the size of the image or when we have to discuss the nature of the image. लीनियर मैग्निफिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि उससे हम ये स्टडी कर सकते हैं कि कैसी नेचर है इमेज जो बनी है या कैसा साइज है जो इमेज बना है. So this is all about beta mirror formula and sign convention, mirror formula and linear magnification. Now let us recapitulate these topics by doing some numericals. First numerical, an erect image 3 times the size of the object is obtained with a concave mirror of the radius 36 centimeter. What is the position of the object? In this case, they have given magnification is equal to be +3 because the image is erect, इसलिए +3. आपको रेडियस दिया हुआ है -36, आपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकालनी है. लेट अस सपोज कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन है -x. माइनस क्यों लिया? क्योंकि हमें पहले ही पता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होता है एंड इट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट. So magnification comes out to be h2 over h1 that is plus v over minus x. v यहाँ से आ गया -3 is equal to 3x. So putting this value of u and v in this we get x is equal to 12 centimeter or u is equal to -12 centimeter. Similarly, let us see one more numerical. A candle is held 3 centimeter away from a concave mirror of radius of curvature 24 centimeter. Where is the image formed? What is the nature of the image?
So you are given with object distance u is equal to minus 3 centimeter, radius minus 24 centimeter, focal length comes out to be minus 12 centimeter. V we have to calculate. So after the using the mirror formula 1 by V plus 1 by U is equal to 1 over F, we get V is equal to plus 4 centimeter. So let us do one more numerical. Let us consider a square wire of side 3 centimeter which is placed 25 centimeter away from a concave mirror of focal length 10 centimeter. What is the area enclosed by the image of the wire? The center of the wire is on the axis of the mirror. कि जो वायर है उसका जो सेंटर है वो एक्सिस पे है और उसकी जो दो साइड्स हैं वो नॉर्मल है एक्सिस की. सो आपको क्या क्या गिवन है बेटा? आपको गिवन है h1 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपको गिवन है -25 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ गिवन है -10 सेंटीमीटर. You have to calculate the image distance and you have to calculate the magnification. So again, let us use the mirror formula. 1 by u plus 1 by v is equal to 1 by f. इसको यूज करके हमारी v की वैल्यू आ गई -50/3. This value, negative value, implies that image is real, right? And moreover, magnification comes out to be 2/3, so h2 comes out to be -2 centimeter. So उसकी जो image आई उसकी height कितनी आई? 2 centimeter, right? So area आ गया आपके पास square का side into side, that is -2 into -2, 4 centimeter square. In this way, we can use mirror formula to solve all the types of numericals. Now, let us again recapitulate the whole topic. Let us start with the basic definition of the mirror formula. Mirror formula is a relation between the focal length of the spherical mirror and distances of the object and the image from the spherical mirror. Always remember that the object distance is taken to be negative because it is on the left hand side, and the image distance depends whether the image is on the left hand side or on the right hand side of the mirror. If the image is on the left hand side, then it is taken to be negative, and if the image is on the right hand side, then the distance is taken to be positive. After this, we have studied about the sign conventions. Sign conventions play a very important role in the derivation of mirror formula because they give us basic rules. The first sign convention is that all the distances are measured from the pole of the spherical mirror. जितने डिस्टेंस हम लेते हैं वो सारे किससे मेजर होते हैं? पोल. पोल इज द मेन पॉइंट. नेक्स्ट थिंग, the distances measured in the direction of the incident light are taken as positive, and the distances measured in a direction opposite to the incident light are taken as negative. Clearly, इस डायग्राम में अगर हमने ये चीज दोबारा समझनी हो तो अगर मैं BP बोलूं, BP, अगर कोई रे B से P पे ट्रेवल कर रही है तो उसका डिस्टेंस पॉजिटिव होगा क्योंकि it is along the direction of the incident light. और अगर मैं किसी का सिंबल रिप्रेजेंट करती हूँ PB, so it is negative. Why? Because PB has a direction opposite to the direction of the incident light. So in this way, we have to keep this thing in the mind that the distances should be very properly given the sign. If they are in the direction of the incident light, they are positive. If they are opposite to the incident light, they are negative. Then the heights that are measured upwards and perpendicular to the principal axis of mirror are taken as positive, and the heights measured downwards and perpendicular to the principal axis are taken as negative. So after this, we derived the mirror formula for the concave mirror. In both the cases, we considered two cases. In case 1, the image formed was real when the object is held in front of the concave mirror beyond the principal focus.
And in case 2, when the object is placed between the pole and the principal focus, virtual image is formed. In case 1, by drawing the ray diagram, by keeping the object beyond the center of curvature, we draw ray diagram, and by using the proper sign conventions and by using the similar triangles concept, similar triangles property, we proved that the mirror formula comes out to be 1 by V plus 1 by U is equal to 1 by F for a real image. Similarly, for the virtual image in a concave mirror, again, we considered an object in front of the concave mirror and a virtual erect and magnified image is formed on the other side. Again, by using the same path, we come to the point that 1 by V plus 1 by U is equal to 1 by F. In the similar way, for the convex mirror also, the formula comes out to be 1 by V plus 1 by U is equal to 1 over F. Right? Again, after this, we discussed about the linear magnification of a spherical mirror, which is given by M is equal to H2 over H1 or minus V over U. Right? मैग्निफिकेशन हमें इमेज की नेचर बताती है. जैसे अगर हमारे पास मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इमेज इनलार्ज्ड है. अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी है तो इमेज डिमिनिश्ड है. अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है बेटा तो इमेज इरेक्ट है. अगर मैग्निफिकेशन आपकी नेगेटिव है तो इमेज इन्वर्टेड है. राइट? इन दिस वे मैग्निफिकेशन की हमें वैल्यू ये बताती है कि जो इमेज है वो कैसी है. So by using this formula we can solve various types of numericals. I hope this concept is clear to all of you. Thank you.